Dear friends, good evening. Welcome to my YouTube channel. Friends, I talked yesterday about artificial intelligence and what the artificial intelligence is. And today I am going to speak about the processes that take place in the system, in the machines or computer system under these artificial intelligence. As I talked yesterday that artificial means man-made, man-produced and manufactured by man. And intelligence is an ability to reason, an ability to reach to the conclusion, and taking strong and predicting and reaching to the conclusions on that particular basis. So, see the difference between the human and artificial intelligence is very clear and sharp. I talked about yesterday that artificial intelligence enables a system to process a large amount of data. एक बड़े डेटा को ये प्रोसेस करता है, फिर एक्चुअली लेटर ऑन ये उसको क्या करता है, एनालाइज करता है, उसको ब्रेक करता है, क्लासिफाई करता है, और फिर इसके बाद वो उसके ट्रेंड्स को, उनके सिम्टम्स को, उनके मॉडल्स को ये टैली करता है और इसके बाद वो डिसीजन या प्रेडिक्शन में पहुंचता है. सो इंसान की जो क्यूरियोसिटी है और जो उसकी क्रिएटिविटी है, इट इज अ वंडरफुल थिंग. एंड व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन द प्लैनेट? दैट इज अ मैन. Human beings, they have a tremendous scope if their mind processes, reasons, and thinks properly to understand these things that are taking place in the nature or in the environment. So, a desire to know something is curiosity. And if you see creativity, actually creating new ideas, new understandings on the basis of what they have observed. So, being observant is a magnificent thing. If you see what is happening around and then just try to rationalize logically and creatively. So, this artificial journey and inception actually starts from since 1956, and now it culminates into its practicality. It's the greatest breakthrough. And as I talked yesterday that its ability, a man learns from mistakes, a man learns from the surroundings, a man learns from the environment. And this is the capacity to observe things that are happening around. Why is this happening? What are the reasons? And then just try to understand how they are happening, in what steps these processes are taking place. So this is very, very important thing. Is man curiosity, a human being curiosity, and then just giving the reasons, on that basis creating new ideas, नए नए आइडियाज को जनरेट करना, क्रिएट करना, ये ह्यूमंस की एबिलिटी है. और इस बेसिस पे जब एनी पर्सन जब ऑब्जर्वेंट रहता है, ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है डीपली एग्जामिनिंग द थिंग्स अराउंड, deeply understanding what is happening around in surrounding and environment. This is being observant. So man tendency is actually being observant. Curiosity
and creativity. These two things are, first step is curiosity. Without curiosity, you cannot be creative. So therefore you have to understand, curiosity is the first step and creativity is taking place later on. And these two things are deeply connected. And let me explain about something very, very important, that creativity inspires innovation. जो क्रिएटिविटी होती है वो इनोवेशन, जिसे हिंदी में नवाचार कहते हैं, न्यू आइडियाज को फॉर्म करना, न्यू अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना और उस बेस पर थिंग्स को एनालाइज करना, क्लासिफाई करना. अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, जिसमें थिंग्स और एलिमेंट्स क्लासिफाइड हैं. तो ये एबिलिटी है उन साइंटिस्ट की जिन्होंने दे अंडरस्टूड द टैलेंट, they were very observant, they were very experimentative, and therefore they ultimately discovered something that is a breakthrough. So dear friends, this is a wonderful idea. आपको क्यूरियस होना है, आपको क्रिएटिव होना है, और टेक्नोलॉजी के इस दौर में अगर आप क्यूरियस नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, तो आप कोई टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं. और लेट मी टेल यू दैट जो मेन कंपोनेंट्स हैं एआई के, पहली चीज है डेटा प्रोसेसिंग. ये डेटा को प्रोसेस करता है, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. इट्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द एआई. ये डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है, रिफाइन करता है, और फिर उसमें जो मिस्टेक्स हैं, जो रिफाइंड चीजें नहीं हैं, उनको सेपरेट करता है. फ्रेंड्स, मीन्स प्रिपेयरिंग रॉ डेटा. रॉ डेटा क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं. रॉ डेटा का मतलब होता है जो सेंसर्स से मिलता है आपको इंफॉर्मेशन, डेटा जो सर्वेस से मिलती है इंफॉर्मेशन और डेटा, और जो आप अचीव करते हैं फ्रॉम ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट सोर्सेस से. तो ये चीजें पर्टिकुलरली उसमें होती हैं. और फिर होता है क्लीन एंड ऑर्गेनाइज ये करता है. रॉ डेटा को क्या करता है? ये आप उसमें फीड करते हैं, उसको ये क्लीन करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और उसको कन्वर्ट करता है डेटा को यूजेबल फॉर्म में उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है. ये पैटर्न्स को फाइंड करता है, और फिर ट्रेंड्स को फाइंड करता है, और रिलेशनशिप को फाइंड करता है इन डेटा. रिलेशनशिप कैसे होती है? कंपैरेटिवली ये होता है. जैसे आपने पहले जो साइंटिस्ट ने फीड किया है डेटा, किसी भी एक्सपर्ट ने फीड किया है डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो ऑलरेडी वहां पे ट्रेंड्स हैं, पैटर्न्स हैं, डिजाइन्स हैं, ऑलरेडी वो चीजें वहां पे अवेलेबल है. जब आप उसमें कोई रॉ डेटा एंट्री करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाती है प्रोसेस, और उस रॉ डेटा को वो फिर वो करता है, रिफाइन करता है, क्या व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, फिल्टर करता है उसको, और अल्टीमेटली उसको फिर चीजों को क्लासिफाई कर देता है और रिमूव कर देता है एरर्स को, जो उसमें एरर्स हैं डेटा में, जो इंफॉर्मेशन गैदर हुआ. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एआई इज टू फीड द एक्यूरेट डेटा. अगर आप उसको गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो आपको आउटकम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ट्रेंड्स हैं वहां पे, जो पैटर्न्स हैं एआई सिस्टम में, मशीन में, कंप्यूटर सिस्टम में, वो उसको टैली करता है. जो पहले फैक्ट्स उसमें फीड किए गए ऑलरेडी फेड है. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हम फीड कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, चाहे वो सेंसर्स के माध्यम से हो, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, और चाहे वो अदर सर्वेज और रिसोर्सेज के थ्रू हो. सो इट इज टू बी अंडरस्टूड. ये समझा जाना बहुत जरूरी है
कि अगर हम रॉन्ग डेटा, फॉल्टी डेटा अगर एंटर करेंगे तो उसके जो डिजायर्ड आउटकम्स हैं वो हमको नहीं मिल पाएंगे। फिर डेटा को एनालिसिस करना, प्रोसेसिंग डेटा, रिफाइनिंग डेटा, और फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एनालिसिस करना। एनालिसिस में अंडरस्टैंडिंग डेटा, find patterns, trends, and relationship in the data, and then finding which email look like spam. So what is faulty? If emails are spam, faulty and not correct, it takes the particular email into the spam folder. It means if in your system the emails are going directly to the spam, so you have to understand that these things are faulty. स्पैम एक वो होता है जो अदर सॉफ्टवेयर में सिस्टम होता है जिसमें ड्राफ्ट रहता है और डिजाइन और उसके नीचे वो जो रहता है कंपोजिशन और ये सारी चीजें एक सीक्वेंस से रहती है, उसमें स्पैम नाम का एक वो होता है ऑप्शन, उसमें जाके स्टोर हो जाता है। अगर वो फॉल्टी है, स्पेसिफिकली डिटेक्ट करता है फॉल्सी ईमेल्स को जो फॉल्टी हैं और उनको वहां जाके वो स्टोर कर देता है। देन हमको ये समझना है कि जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेकिंग सेंस ऑफ रिजल्ट्स एंड वॉट एवर रिजल्ट्स यू हैव गैदर्ड, सो इट स्पेसिफिकली उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है एंड एक्सप्लेन्स व्हाट द पैटर्न मीन्स। क्या उसका मतलब है उस पैटर्न का, ये उसको एक्सप्लेन करता है। एंड देन नेक्स्ट होता है, एक्चुअली दिस ईमेल लुक्स सस्पिशियस बिकॉज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। So if anything is suspicious or inconsistent or anything else like that, so if things are not consistent, consistent का मतलब होता है to be accurate, to be precise and to be transparent. If things are inconsistent, not fair, unfair चीजों को आप inconsistent में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है वो अमेजिंग प्रोसेस है, वेरी अमेजिंग, डिसीजन मेकिंग। पहले हमने बताया डेटा, प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, एंड देन होता है डिसीजन मेकिंग। यू कैन नोट डाउन दीज थिंग्स, वट एवर आई एम टेलिंग यू, दीज आर द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस in that particular system. So decision making means taking action, then actually chooses the best action based on interpretation. Interpretation is the second last. Last of all is that the decision making. So chooses the best action based on interpretation and marking email as spam, S-P-A-M, spam. If your email is reaching to the spam, is converted into the spam or forwarded into the spam, you must understand there is something faulty, there is something wrong, and there is no consistency in that particular thing. So these things are inconsistent if it is in spam folder. Friends, we have to understand what is data. First of all, understanding data to make better decisions. And what it does, it actually looks at data carefully. Artificial intelligence finds patterns or trends, helps answer questions, and support decision making. So raising question on something, the information that you are witnessing around, जो आपके चारों तरफ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो उसका एविडेंस होना, बनना, और फिर उसमें क्या करना, उस बेसिस पे उस चीज के ट्रेंड्स को समझना, पैटर्न्स को समझना, और फिर क्वेश्चन रेज करना, और फिर सपोर्ट करना डिसीजन मेकिंग में।
and collecting data. See, actually, this is very, very important process. So cleaning data, it cleans data, then analyze it, finding insights. What is insight? Actually, insight, a clear and deep idea about why something happens. So when you develop this kind of understanding, that the idea why something happens, not what the things are, actually why something happens. First what the things are, then why they take place. And dear friend, I am very much, this robust technology, very strong technology is very, very important to be learned and to be understood. I'm giving you that insight. Like data, I'm giving you example. Students are not performing. Their result is so, low. So this is actually data. And the insights are students are dropping their performances or losing their performances. That understanding is called insight. So first one is that data, students performance is low, results are low, and then their performance is going down, and that's very, very important because that understanding is called insight. Why the performances of you, क्यों वो रिजल्ट जो है उनका बैड है, why are they not performing as they are expected to perform? This is very, very important process. And next one is, suppose I already told you, recently I have told you that students scored low marks, that I said. This is actually students did not practice enough. This is insight that you understood that they have not practiced enough. And then, this is very, very important to understand. And this algorithm, this mathematical models are there. So one has to understand the importance of algorithm in the artificial intelligence. It's very, very important. It is a recipe for solving problem. आप वेजिटेबल कुक करते होंगे, पहली प्रोसेस क्या करते हैं? वेजिटेबल्स को पील करते हैं, फिर उनको कट करते हैं, फिर आप फर्स्ट प्रोसेस में उसमें ऑयल डालते हैं आपके कॉल्ड्रन में, और फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट देते हैं, and thereafter you put some spices in. So there is a kind of process that take place right from the beginning, right from peeling and then cutting the vegetables, and then just putting the oil and heating it, and then putting some spices there. This very, very important algorithm. So just like it is just like a cooking recipe, tells you how to make food. Means what are the processes that takes place in cooking food. These are recipes. If you don't know the recipes, you will not be able to cook food properly. So friends, then actually an algorithm tells AI how to process data and get results. So example like non-AI, I'm giving non-AI example, very clear example that you can match with the artificial intelligence. So suppose making tea algorithm. First boil water, second add tea leaves, third add sugar, okay, then add milk. So these steps, and these are known as algorithms. So it's a very, very easy thing. And in artificial intelligence, like spam emails, that is a kind of, due to that algorithm process.
it happens? Friends, the algorithm checks words like, French, free, and marks emails if many suspicious words as spam. Simple rule based on algorithm. And I am telling you second, movie, recommendations. What is recommendations? Recommendations means the kind of suggestion you give to someone. So, you know, check it checks what movie you watched and finds similar users and then suggest movies they liked. And recommendations actually algorithm like self-driving cars where your computer vision is able to understand where are the traffic lights, signals, and how to move into the traffic. So self-driving car is the magic in artificial intelligence, ability to do that. Then friends, detect objects in the traffic like cars, people, signals, and decide when to stop or move. Man is not there. It's a self-driving car, completely automated, completely having the system where computers are able to understand or is able to understand what is to be done. Where is the traffic? How to move left or right? Where to go into the circle? Move into the circle. These are very, very important processes and a vision of a computer. So, dear friend, it's very important to understand these things and online shopping, suggestions. So, tracking your searches, show related products. It shows related products. Your search according to the search that you perform in the artificial intelligence. You don't know that whatever you are searching, you are no more. Your information is no more confidential. It is public, and it reaches to other people actually to whom you are not expecting to forward these things. So, dear friends, it's a very, very important, thing to understand these processes. And in next video, I would like to talk about very importantly machine learning, ML, and DL. On the basis of the trends, I will also explain the trends, the patterns, and the models, mathematical models. So one, you don't have to be panicked. आपको panicked नहीं होना. You have to be very, very smart in this technological age. That will determine your course of success. So it's a very important. It's a prerequisite, prerogative to be understood. Thank you so much. Have a wonderful day.